6 हफ्तों में से 5 हफ्तों में अगर मैं लाखों करोड़ों को नहीं टच कर पाई, 1 हफ्ते में कुछ नहीं होना था। कनेक्शन विद निशांत फ्रॉम द स्टार्ट जो मैंने चूज किया था एंड इट वर्कड रियली वेल। आई एम ग्लैड कि हम एंड तक इतना स्ट्रांग थे एंड आई वाज लाइक डूड, अगर ये इतने अच्छे एक्टर हैं देन तो आई विल बी इम्प्रेस्ड अगर ये मिले भी हुए हैं। द वे माय जर्नी हैज बीन ऑन सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं छुपा है। Didn't like some of the things Divya was doing. इसका मतलब ये नहीं कि she's not deserving. But I really feel कि वो question के लिए I should have been able to defend myself. Which I wasn't, which was sad. बिग बॉस का गेम काफी रोमांचक था एंड फैंस एंड ऑडियंस ने पसंद किया अपने अपने फेवरेट कलाकारों को। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट जिनको फैंस एंड ऑडियंस हेट भी करते, लव भी करते, सपोर्ट भी करते नजर आए थे, दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड क्योंकि मूव्स हो गई थी घर से बेघर एंड कुछ थे काफी एक्साइटेड। लेकिन क्या है स्टोरी मूव्स जटाना की? आइए चलिए सुनते हैं मूव्स के जरिए ही और जानते हैं हाउ वाज हर जर्नी इनसाइड द बिग बॉस हाउस इन टुडेस चैट सेशन विद मी विशाखा पंडित ओनली ऑन टेलीचक्कर। वेल आई वुड नॉट से कि सफर कैसा रहा बिकॉज हम सबने आपका सफर देखा मूव्स, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टेलीचक्कर में फिर एक बार आपका। Thank you. कैसा था बिग बॉस की दुनिया, घर के बाहर आना और अब सामने यहाँ पे? हाउ वाज इट बीन फॉर यू? आई थिंक मेरा सफर में काफी सफरिंग थी। स्पेशली मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता था कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ एंड द सिचुएशन इज क्या एक बार आप अंदर चले गए बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे बैठ के सोचती थी कि एक बंदे को अब ऐसे कैद करके कैसे रख सकते हो। मेरे को एक टाइम पे ऐसे लगने लग गया था कि जो मेरे थॉट्स है वो भी बिग बॉस को सुन रहे हैं, तो मैं उससे भी डरती हूँ कुछ स्टूपिड कह दूं। तो वो थोड़ा सा मोमेंट्स फनी था। वैसे बाद में फनी लगता है, तब तो लग रहा था कि निकालो हो ना, यहाँ से पंछी भी नहीं दिखते थे, यू कुडंट सी एनीथिंग, सब कुछ खराब हो गया बाहर। लेकिन एक बात सच्ची बताइएगा दैट घर के अंदर जाने का जो आपका थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन सेट आपने किया था और फिर आप घर से जब बाहर आई तो लगता है कि जैसे फैंस के लाखों करोड़ों और फैंस को आप जीतना चाहती थी, आपको लगता है कि आपने उनके दिलों तक पहुंच गई है? 6 हफ्तों में से 5 हफ्तों में अगर मैं लाखों करोड़ों को नहीं टच कर पाई, 1 हफ्ते में कुछ नहीं होना था। I think जितना हो गया उतना काफी है। मेरी एक्सपेक्टेशन I was scared to go in. जैसे लोग आके कहते थे Moose youngest contestant, I'm like yeah I know, I can never forget that. कोई मुझे भूलने भी नहीं देता है। So उस हिसाब से I think मुझे थोड़ा सा था कि टारगेट करेंगे, पर 1 हफ्ते में ही उनका फुस हो गया था। But tell me honestly that घर के अंदर कनेक्शन के साथ जाना था। You began with Pratik, but then things did not materialize and कनेक्शन वैसा सेट नहीं बैठा। फिर आप निशांत की तरफ कनेक्शन बना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना जो हमने देखा भी घर के बाहर। आपके एंड से स्ट्रॉन्ग काफी था। व्हाट डू यू थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग और मे बी द कनेक्शन इज स्टिल सेम? व्हाट इज इट? अच्छा मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग था, आपने ये पॉइंट आउट। इट इज मोर लाइक आई वुड से 19-20 की अगर बात की जाए तो यू हैड 20 वाला रेशियो एंड ही हैड 19 बिकॉज़ यू डिड नॉट चेंज योर वर्ड्स लाइक in the last few days we could even see from the outside as a viewer कि जैसे ही you were saying कि मेरा जाने का वक्त आ रहा है, I might go so he quickly प्रतीक जिसके बारे में वो इतना बोल रहे थे उनका साइड चेंज होकर he went towards that side. It was quite evident. So we really would love to know that okay what exactly was it like? जी ऐसे मत बोलो। मत तोड़ो, क्या कर रहे हो? Look, connection wise in the game, I had a connection with Nishant from the start जो मैंने choose किया था and it worked really well. I'm glad कि हम end तक इतना strong थे. With Pratik also, it was more of a crush first. I was like, damn, cute. And then उसके बाद, but the friendship that was built on it was very, very strong. Even when, Moose तूने मेरे को धोखा दिया, like that was the whole idea. I still think धोखा नहीं था. I was concerned about him. It was coming from a place of concern. Game भी and emotionally wise भी. And sometimes we have to pick ourselves. जैसे end में जब उसने मुझे घर से literally निकाल दिया, then also he was thinking for himself, no? So वो भी मैंने समझा. So I'm hoping कि वो मेरा भी समझे. But then I don't know if you saw the recent press conference of media press conference wherein काफी सारे सवाल जवाब किए गए and a lot of people pinpointed Nishant's game planning saying that he was trying to use maybe you, maybe Pratik in all his possible ways. So आप as क्योंकि आप connection थी, क्या आपको भी ऐसा feeling कभी आया? No, I don't think it was like that. I think कि जिनके साथ हम connected थे, the three of us planning, plotting there. With other people it has to be. That's how you play. Like I think कि खेलना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा. As far as it goes for the press conference, what the hell was that? पहले बात तो मेरे बारे में इतने questions होने नहीं चाहिए थे. Press conference के बाद all they're talking about is me and मेरे को बाहर अब आके ऐसी चीजें पता हैं जो मैं देख रही हूँ ना, I'm like Shamita, stop lying. मैं screen पे I'm like Shamita. So I feel like I should have been there for the press conference. मैंने कहा था, मुझे as a journalist ही डाल देते. So then in that sense I think कि I wasn't there to defend myself. And Nishant थोड़ा सा अकेला पड़ गया है. I've always been there in every argument. वीकेंड के बार पे भी sometimes when he would be speaking और उसके दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा था, मैं पीछे बैठी I'm like they didn't say that word. So एक दूसरे के लिए ये बहुत करते थे I'm like और उसने ये भी कहा था तब. He's like और तूने ये भी कहा था तो
So उसमें भी मैं सोच रही थी, like निशु मैं यहाँ से बैठी हूँ ना, ये जवाब दे रही है, वो थोड़ा सा मुझे फनी लगा. I felt bad for him. But then now what? Now that you're outside from the house, now how is your bonds gonna be shaping up with, like, with Nishant or with Pratik or with the other house members? How are you gonna be taking your journey with them ahead? I think first मैं दोनों को इकट्ठा करूंगी और मैं उनको पहले तो सब कुछ सुनाऊंगी कि इतनी बार मारा गया था, इतनी बार गाली दी गई थी, इतनी बार तंग किया गया था, इसका सॉरी, एंड उनसे मांगूंगी, मैं नहीं. एंड देन उसके बाद आई थिंक वी ऑल हैव सम क्वेश्चंस, यू नो, वो बिल्कुल भी आई वोंट बी अटैकिंग देम के सबसे बड़ी चीज़ इज द एलिमिनेशन, राइट? Everyone thinks I'll be very mad at Pratik. It's not really like that. मेरे को वो betrayal नहीं लगा because I know कि उसके दिल में जो उसने feel किया, he did it, you know. Yeah. Hope मैं जरूर कर रही थी कि you know 10% कि शायद he will just remember everything. But कई बार आपको नहीं याद रहता. You're in the big boss house. You're also playing. So गुस्सा नहीं है. I just will have conversations with them and if we are in agreement, then we go ahead. नहीं तो भाड़ में जाओ, फिर मत बात करो. 6 हफ्ते भी बहुत थे. अग्गी हूँ मैं वैसे भी. Talking about agreement and disagreement, घर के अंदर एक ऐसा bond था, you know, Pratik and Divya, that is like a huge question mark that, you know, people like point पे they were thinking it's fake. उनको लग रहा था शायद सिर्फ कैमरे, जब मतलब obviously 24/7 आप कैमरे के आ गए, but then वो fake है. But then you were like a live spectator घर के अंदर. What did you feel about it? And then कल उनका explanation कि वो 3 साल पुराना जख्म उनके मन में आज भी है वहीं का वहीं. What did you feel about it? निशांत ने भी कहा था कि तुझे लगता है यार ये मिले तो नहीं हुए, like and I was like dude, अगर ये इतने अच्छे एक्टर हैं then तो I will be impressed अगर ये मिले भी हुए हैं, because मैंने सोचा, मैंने कहा how could it possibly happen कि like you know, so I think that was just a लोगों का फनी तरीका था कहने का कि ये इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं. मुझे तो ठीक लगता था. आई थिंक इट वॉज अ गुड फिलर. लाइक जब कोई कुछ लड़ाई नहीं हो रही है, कोई प्यार प्यूर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा घर में, तो दिव्या एंड प्रतीक को यू कैन पुट देम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. इनका गुस्सा जो था मैंने सुना है इनसे, बट दे डोंट रियली हैव अ रीजन. आई थिंक दे आर जस्ट हर्ट, दे आर नॉट एंग्री. वो एंग्री से निकल रहा है, दे आर जस्ट कंफ्यूज्ड. और दोनों अब ये सोचो कि दोनों बिग बॉस में आके अपने इश्यूज थोड़ी सॉर्ट करेंगे. दे वोंट बी लाइक कि हाँ यू नो, बिकॉज इश्यूज में you don't want to do that on national television. ऐसी private sensitive conversations are meant for outside of the house, but अब मिले ही वहाँ हैं. So I think ये सब कुछ होने के बाद if they have a conversation, it won't be that hard to figure it out. But then I would say, Moose, I would applaud you for one thing, because Big Boss में जहाँ इतने सारे खुलासे किए जाते हैं, you are one such contestant on a BB OTT में. Even though you are quite vocal about your thoughts, but आपने अपनी sexuality के बारे में clearly आके you know you talk without being afraid of it, and you owned up to it that yes, this is what it is. When you said those conversations, क्या आपके mind में second thought आया that okay, OTT पे नहीं कहना चाहिए था, या फिर were you okay with it, or what was it like? आपके mind में क्या चल रहा था? मेरे mind में कुछ नहीं चल रहा था. मेरे mind में काफी वक्त कुछ नहीं चल रहा होता. I think I've said so many things where people are like, so तुम्हें ये ठीक लगा कहना? And I'm like, मैं सोच ही नहीं रही थी. I think at the start you genuinely तुम चाहते हो कि तुम भूल जाओ कैमरास हैं कि नहीं है. But also the way my journey has been on social media, कुछ भी नहीं छुपा. People want to know freaking everything. So if that's their problem, फिर उस पे मैं I can't prove anything, you know. जो कहा मैंने वैसे ही कहा. Like that's how I would speak to a friend in the outside world. अगर हम you know, I'm like Pratik, let's go have coffee. This is, I would just say it. तो मुझे वो लगा नहीं कि छुपनी चाहिए बात. एंड मुझे ये भी नहीं लगा था कि इतनी बड़ी बात होगी. मैं भूल गई थी मैं कौन से देश में हूँ, क्या होता है यहाँ पे. I genuinely forgot because someone said to me, it's not that common in India, you know, television पे. मैंने कहा oh it's not, oh shit. फिर मेरे को एकदम से आया, oh god, yeah, true. But then on the same note, I would say that you know, who do you think is being still has not opened up in his game plan, क्योंकि 3 दिन रह गए हैं. दिव्या जहाँ पे openly अपना single handedly गेम खेल रही है, the other मतलब what do you call नेहा एंड प्रतीक के लिए कहा जा रहा है कि वो अभी भी कपल की तरह ही गेम खेल रहे हैं. शमिता एंड राकेश are maybe confused. Rakesh is what, like there's a lot of questions still going inside the house itself. Who do you see going up ahead, like you know, the top 2 में जाते हुए किसको देखती हैं? I think I see Nishant and Pratik and Divya also. I think they should be in the other house, in the sense that you need people that play Big Boss, whether you like their way or not. I didn't like some of the things Divya was doing. इसका मतलब ये नहीं कि she's not deserving. I think she is deserving, you know, because वो game खेल रही है, she has a plan. और जो 3 लोग रह गए हैं, नेहा एंड शमिता एंड राकेश, they don't have a plan at all. वो कहते हैं लोग planning, plotting करते हैं as if it's a bad thing. It's a good thing. You need to do it. जब कोई task आया है, the audience wants to see you talking about the task and planning something to win it, you know. पर वो उनके दिमाग में था ही नहीं. And task के वक्त भी छोड़ दो,
हमें नहीं चाहिए पॉइंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू शुडंट बी सेइंग. सो मैं उनको नहीं चाहती कि वो मैं अगले घर में देखना. But what would you say about Pratik कहीं ना कहीं getting a tag of रद्दू, like you know उन्होंने maximum task रद्द करवाए हैं, मतलब if he couldn't win the task it's like रद्द करवा दो, like मेरा नहीं तो किसी का नहीं वाला attitude. Do you feel the same way around? No, मुझे बस ये लगा कि जो लास्ट वाला रद्द हुआ था फिनाले वाला, पता है मेरे को क्या पता लगा by the way, कि जो लाइव में था उसमें दिखाया था कि I went to the kitchen and I said if Pratik doesn't come inside टास्क रद्द हो जाएगा. ठीक है, मैंने ये पहले ही कह दिया था. And people were like निशांत like ऐसे नहीं होता है ना. शमिता was like shit, उसको कोई लेके आओ. मैंने हाँ, पर एपिसोड में ये दिखाया है कि शमिता बाहर जाके कह रही है प्रतीक अगर तुम अंदर नहीं आए तो टास्क रद्द हो जाएगा. मैंने ये पढ़ा है ना, उसने चलाको मासी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब मेरा दिमाग का जो वो है दिखाते ही नहीं. सो मुझे बस ये लगा था कि प्रतीक अगर तू इतना ही सूझबूझ दिमाग है तेरे में, सो यू शुड हैव आल्सो नोन दिस कि टास्क रद्द हो जाएगा. यू नो, सो आई डोंट थिंक उसकी कभी इंटेंशन थी. ही इज अ वेरी एक्सट्रीम प्लेयर एंड आई थिंक कई लोगों की बिल्कुल भी शिद्दत नहीं होती, कई लोगों की बहुत ज्यादा होती है. इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ हाउ इन्वॉल्व यू आर विद द टास्क. He is a bit on this side. So I would not play as extreme as him. But वो खेलता है तो it's fine. Raddu is a funny thing to say. I don't think उसकी intentions होती हैं. Okay, last thing here that yesterday I don't know if you saw or heard or not, but your name had been popped up with one major question जहाँ पे Shamita had talked about your private parts. You know, she's very because you were not there. She's like, okay, I apologize. That's it, done and dusted. And वहीं पे Divya was not even given a chance to. You know, she was called quite the words, and you know there was a huge, massive argument there. Do you think that she was playing safe because आप वहाँ नहीं थी अपने आप को defend करने के लिए, or is that how she is? That, you know, because she didn't say what she said. उसने बोला ही नहीं. She's still saying कि मैंने कुछ नहीं कहा. So that you're not actually sorry. And this is what she always does. She just says sorry and doesn't change anything. But I really feel कि वो question के लिए I should have been able to defend myself. Which I wasn't. Which was sad because अब सिर्फ दो लोगों को पता है क्या हुआ, राकेश and Shamita. Both of them are not saying it. And मुझे पता है बाहर बैठ के. So I'm thinking निशांत उसने कहा है, you know, I'm thinking प्रतीक उसने ये I want to like let them know, but अंदर किसी को पता ही नहीं है. So I think they're being cowardly. But do you think that you will be having like a major reunion after these people are out from the Big Boss house and clearing all the air, or you will just let it go with other people also? Not with, I won't have a reunion with everyone, and I'll also see कि वो कितना effort डाल रहे हैं. Genuinely मेरा दिल बहुत छोटा है. Even in the house, I couldn't keep grudges or anything. So like if Shamita, you know, comes back to me, I'd probably be like, okay, fine, like that's okay, you know, I just need a good explanation. So obviously there's a few people that I've already spoken to, जो पहले आए थे बाहर, I've spoken to them. ये भी आएंगे, we'll speak. घर में ना करण के चप्पलें पड़ी थी जो वो भूल गया था, वो अभी मेरे टची में से निकली हैं. घर वालों ने मेरे साथ भेज दी है कि शायद करण को वापस कर लिया whatever. और करण की मैंने इंटरव्यू देखी, I don't think he wants to speak to me again. ऐसे बैठी सोच रही हूँ बाहर भी मेरा बिग बॉस चल रहा है. No, but then in that case, lastly, सिर्फ इतना बता दीजिए that you know, seeing how Pratik was being like when he had to speak, he was being too over loud. When Divya had to speak, she was not letting being spoken about. Like Shamita and Neha again doing actions and everything. जब उनकी बारी आती तो Divya was waiting. Do you think that you know this is fair? This is unfair? What is your take on it? The whole thing with live and episodes is कि आपको you want the people making the episodes to be sensitive and. But the thing is, sometimes they do have a storyline. They have a storyline they want to follow. And अगर वो storyline ये हम किसी को ज़्यादा दिखाएंगे, किसी को कम. Like with me, people said कि live में दिख रहा था कि I was clear, but in the episodes ये दिखाया जा रहा था कि मैं confused थी प्रतीक और निशांत के between, which I wasn't, है ना? So वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगती हैं कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं. You can just hope that it's not very malicious to yourself. So वही प्रतीक और नेहा का I think they're using a certain storyline and उसके आगे वो उस पे आगे जा रहे हैं, you know. But do you think that Shamita and Neha are overpowering Divya, or Divya is equally the same boat? What is it like? I don't know if they're actually able to overpower her, but वो उनकी personality है Big Boss वाली ऐसी बन गई है कि we're the queens or somehow we're above each other like other people. And वो somehow weekend के बार पे वो उसको ही बढ़ावा दिया जाता था. Lastly, इतना बता दीजिए, now that the journey has finished, now that you have a new journey ahead, hopefully, what would you like to tell the fans? क्या expect करें वो अब move की journey के आगे? कुछ ज़्यादा ना expect करें. मैं तो कह रही हूँ expectation बिल्कुल ही रद्द कर दो. मुझे रद्द कर दो. मेरा मन कर रहा है मैं फिर से अपना account बंद करके बैठ जाऊँ. Because it's too much interaction at once. कहाँ आप 6 लोगों के बीच थे, you know, and now suddenly everyone. And the funniest thing is कि जो निशांत के साथ फैन पेजेस है वो प्रतीक के बारे में, उसने तेरे बारे में ये कहा, he doesn't really love you. और प्रतीक वाले कह रहे हैं निशु तू ऐसा था, प्रतीक loves you. And I'm like, dude, it's chill, like don't worry about it. You know, so इतना ज़्यादा opinion at once. It's cute, they're very nice. And I would just like to say thanks for the support. A big thank you.
Well, I wish you all the luck, Moose. I would surely be waiting for a good news from your end. बहुत जल्द, I hope कि you know बहुत जल्दी we good get not that good news, but then the real good news in your career, I hope. And Okay, keep thank you. crossed. Thank you. But it was a pleasure having you here at Telechucker. Thanks for having me. Bye. Well, thank you so much, guys, for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ आज मेरे साथ थी addicted contestant Moose Jattana, जिनको आप लोग देख रहे थे Big Boss OTT में. Well, we really hope that Moose के आज के chat session से आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे. And if yes, do tell us in the comment sections below. And until then, stay tuned to Telechucker for all the more updates about the tele world. Know all about the Tele world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.